Okay, hello, good afternoon. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel. We are back with another Hindu and Indian Express analysis. Today is 3rd of September, and today we also have our special Menti quiz. Sharve is here. Mishika is saying, what was the Menti quiz topic for today? The topic for today was June July current affairs. So, current affairs from the month of June and July were the topic for today, and we'll quickly do a little bit of Hindu analysis and then we'll start with our Menti quiz. Who all are here? Kindly let me know in the chat box. Riddhi is here. Hello, Riddhi. Good afternoon, Mishika. Good afternoon, Deeptakshi. Good afternoon, Sharve. Ridhima, Pavitra. Good afternoon, all of you. मेंटी कोड दे देंगे, थोड़ा सा हिंदू एनालिसिस कर लेते हैं. मेंटी कोड आई शेयर इट विद यू. गुड आफ्टरनून दिव्यांश. Okay, we'll start in just 30 seconds. Till then, tell me, are you guys prepared for the quiz? Yes, no? June July के current affairs, have you prepared? Yes, no? Dhwani is here, Shreya is here. Good afternoon, guys. Very good afternoon. Are you guys prepared for the quiz? Yes, no? Answers. Okay, Arman says no. Shreya says yes. Pavitra says yes. Riddhi says yes. We'll try. Good afternoon, Alia. श्रेया सेज थोड़ा 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 से कैसे काम चलेगा, पूरा पूरा करना है. ओके चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस फॉर द डे. Diptakshi is saying maybe fully prepared. One never knows what questions are there in surprise. The questions are pretty straightforward in today's quiz. I would call it an easy to moderate quiz. A lot of factual questions in today's quiz, but nothing very extraordinary, nothing you cannot possibly contemplate or something out of the world. ऐसा कुछ नहीं है. It's all within the domain of what you need to study for your CLAT current affairs. Okay, we have a lot of people. Adrija is here, Suhana, Shweta, Ridhima, Shravs. Welcome to the class, all of you. Let's start today's analysis. Quickly give me a ready in the chat box if you all are ready for beginning today's class. So jaldi se ready in the chat box and then we shall start. I hope I'm audible, visible, and my presentation is also visible to everyone. Let's get a ready in the chat box so that we can start. All right, everyone is ready. Let's begin the analysis for the day. It's 3rd of September. I'm your host, Govind Singh, and your faculty for GK, LR, and English. Okay, so we have just two topics from the Hindu editorial today. Two important topics. One is a headline news, and one is a editorial article, both from the Hindu newspaper today. And then we have our Menti quiz. This is the Menti quiz code. And आज vocab देखते हैं, टाइम बचता है तो कर लेंगे, वरना कल कर लेंगे. ठीक है, तो चलो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, which is regarding bulldozer justice. It's on the front page of the Hindu newspaper. Now, what is bulldozer justice? थोड़ा सा समझते हैं. So, I am sure most of you must have read in the news or probably heard it on social media, seen it somewhere, that a lot of people who were accused in XYZ crimes, their homes were demolished with bulldozers. It primarily happened a lot in UP and in MP. So, have you guys heard of this? Bulldozer being used to demolish buildings of people who were accused in crimes, either hate speech related crimes, either murders, or either sexual related crimes, assaults. Have you guys heard of such news? Bulldozer से घर गिरा देने वाली. Yes. Shreya, I'll tell you everything about Menti. Let's get done with the analysis. Then Menti का बताता हूँ मैं आपको. Okay, most of you have heard it. कंगना रनौत का क्या relationship है यहाँ पे? I think it is related to योगी. यूपी में काफी सारे इंसिडेंट्स हुए थे. तो
अब सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट पिटिशंस फाइल हुई कि दिस इज अनऑथराइज, दिस इज अनलॉफुल, दैट यू कैन नॉट डिमोलिश एनीवन्स होम विदाउट following the due process of law. There is a process of law. If some construction is an illegal construction, unlawful construction, if the building is unauthorized or not following compliances, you can send a notice. If the notice is not replied to, or if the notice is not followed, then you can probably send another notice or can send a reminder. And if anything is not working out, then you can probably take stricter action and demolish these homes. But यहाँ पे the case is these demolitions are taking place when these people are being accused of crime. So, for example, ABC person committed a crime, let's say a murder, and then the next day his home as well as his relatives' home was demolished. Now, the logic which the Solicitor General gave in the court, who was representing the government, was that these were illegal constructions. सो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन उनसे पूछा कि ठीक है, दीज वर इलीगल कंस्ट्रक्शंस एंड यू डिमोलिश देम, व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दिस क्राइम वाज कमिटेड, बिफोर दिस पर्सन कमिटेड द मर्डर, व्हाई वाज एनी एक्शन नॉट टेकन, and how is it linked to a person committing a murder? Can you demolish someone who is accused in a crime? Can you demolish the home of someone who is accused in a crime? Or can you even demolish the home of someone who is, let's say, guilty in a crime? Court even goes on to say कि अगर किसी बंदे ने मर्डर किया भी है तो क्या उसका घर गिरा देना ठीक है, या उसके रिलेटिव्स का घर गिरा देना ठीक है? Is this as per law? The court said no, it is absolutely not as per the established law. It is unlawful, it is unauthorized, and law does not allow raising of homes of accused. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक तो ये चीज कही कि भाई इवन इफ यू आर अ कॉन्विक्ट देन स्टिल योर होम कैन नॉट बी डिमोलिश्ड. एंड द सेकंड थिंग व्हिच दे talked about is establishing national level guidelines for demolition of unauthorized or let's say illegal construction. तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि हम एक नेशनल लेवल गाइडलाइंस बनाएंगे ताकि स्टेट्स जो ये इलीगल एक्शंस ले रहे हैं इन पे रोक लगाई जा सके. दे आर कर्ब्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. और दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट ये है, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आर्ग्यूमेंट ये है कि दिस डिमोलिशन एक्टिविटी happens firstly because the structure is illegal, secondly because it gives people a sense of justice, people who are victim of that crime, let's say the family of the person who was murdered. It provides them some relief or some justice or some respite. But court disagreed with this logic and said that this is definitely not as per law. You cannot do this to serve justice. This is against the spirit of justice. ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर इलीगल है तो आप नोटिस भेजो, आप रिमाइंडर भेजो, आप जो प्रोसेस ऑफ लॉ है डिमोलिशन का उसको फॉलो करो. जस्ट बिकॉज अ पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम यू कैन नॉट डिमोलिश देयर होम. ठीक है, तो क्या you have a fundamental right against the demolition of your home? Tell me yes or no. Do you have a fundamental right which protects your home? Yes or no? Is it a fundamental right? Yes or no? Is this a fundamental right? क्या अगर कोई आके आपका घर डिमोलिश कर देता है, is that a violation of your fundamental right? Yes or no? Okay, some people say yes. Pavitra says no. Protection of life and property under Article 14. How is this related to Article 14? Article 14 is about equality. Right to reside freely in any part of the country. Yes, that is one of the fundamental rights which can be linked to right to residence or right to shelter. Absolutely correct. Article 19 talks about that. I think Article 19(1)(e) specifically talks about that, if I'm not wrong. Secondly, the very apparent fundamental right which comes into play here is Article 21, which is right to life. Right to life ke ambit mein you also have right to shelter. And this was proclaimed by the court in a landmark judgment. What was the name of the judgment? Right to shelter was called to be under the ambit of right to life. It was Chameli Singh versus State of UP, I think. Yes, Chameli Singh versus State of UP in 1995. तो ये आपको पता होना चाहिए कि right to shelter is a fundamental right under right to life, which is under Article 21. And as someone said that right to reside freely, that comes in your Article 19. That is also a fundamental right. So both of these are fundamental rights and they protect your right to residence or your right to shelter. So this is also a violation of your fundamental rights. And you cannot
go against your fundamental rights, you cannot violate fundamental rights. ठीक है? So I think this is all you need to know about this particular news article. This was the not Chief Justice, the Supreme Court judge who asked this question, Justice B.R. Gavai. How can anybody's home be demolished because he's an accused in a case? The law does not permit that. Can it happen even if a person is a convict? ठीक है. सो अब देखते हैं इस पे क्या गाइडलाइंस बनती हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें क्या करते हैं. हो सकता है कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अपना लॉ पास कर दें, ऑर्डिनेंस पास कर दें टू बाईपास दिस पर्टिकुलर डिसीजन, एंड देखते हैं व्हाट हैपेंस, बट प्रीटी इंटरेस्टिंग. All right, let's move on to the next topic for today, which is Disaster Management Act. So, Disaster Management Act किस ईयर में फॉर्म हुआ था? किस ईयर में आया था Disaster Management Act? The original Disaster Management Act came into existence in which year? Can you guys tell me in the chat box? 2005, absolutely correct. Diptakshi is saying, can state government pass such laws? It violates fundamental rights. See, on the face of it, they obviously cannot. But again, they can pass an ordinance which can make it a law. Law cannot be in contravention to fundamental rights, so it would probably go to the High Court or the Supreme Court, and they would strike it down as being unconstitutional. Something which is against fundamental rights is, on the face of it, prima facie unconstitutional. So कुछ टाइम के लिए ऑर्डिनेंस बना के 2-4 घर शायद और गिला दें, बट जैसे ही कोर्ट में जाएगा कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा. ठीक है, तो यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. चेन्नई फ्लड से भी रिलेटेड था एंड 2005 में ये लेजिस्लेशन आया था. अभी रिसेंटली इसमें आना है एक अमेंडमेंट, एंड उसके लिए आया है डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल. नाउ व्हाई इज द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल नॉटी? नॉटी एज इन शैतान वाला नॉटी नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्विस्टेड वाला नॉटी है, KNOTTY वाला. Why is it being criticized, or why is it called complicated or not as per what it should be? Uske multiple reasons. The first reason is this particular bill, which is supposed to become an act very soon, has a top to bottom approach when it comes to disaster management and disaster relief. Now, what is a top to bottom approach? A top to bottom approach simply means order and control flows from the top of the structure, which is the central authorities, which is the National Disaster Management Authority, and then they probably instruct or give control and give authority and give funds to the State Disaster Management Authority, which then further pass on the control and funds to the Urban Management Disaster Authorities, and then action takes place on the ground level. So एक तरीके से ये हायरार्की है जिसमें टॉप टू डाउन अप्रोच चल रही है, टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रही है. एंड इस अप्रोच का डिसएडवांटेज ये है कि दिस इज अ वेरी स्लो अप्रोच, दिस इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस. जब डिजास्टर होता है फिर सेंटर कोई एक्शन लेने में टाइम लगाता है, फिर वो स्टेट को इंस्ट्रक्शंस देता है, फंड्स देता है, फिर स्टेट उस पर एक्शन लेता है, फिर टास्क फोर्स बनती है, फिर एक्शन में आता है, फिर फंड्स रिलीज होते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है. तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है ऑफ लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी. So this is one major drawback. The second thing which they are saying is that this particular bill gives a lot of power to just the central authorities. It is very, you could say, it should be more decentralized in nature. There is over centralization of authority, of control, of funds, सब कुछ center के हाथ में. So then it becomes problematic to have a smooth functioning relationship between your central authorities and your state authorities, क्योंकि ज़्यादातर powers इसमें central governments को मिली हुई है. Third thing, which is being talked about in this particular editorial, an important thing is notified disaster. इसकी बात हमने पहले भी करी है कि NDRF के अंदर, which is your National Disaster Relief Fund, जिसके अंदर आपको funds या relief दिया जाता है for disasters, that is only catering to a few notified disasters. आर्टिकल में नाम लिखे हैं उनके, अभी हम पढ़ेंगे. Flood, drought, earthquake and all of that. इस तरीके से 8-10 disasters हैं. तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एन एक्सक्लूसिव लिस्ट, एंड इसके बियॉन्ड अगर कोई डिजास्टर है देन दैट डज नॉट गेट रिलीफ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एनडीआरएफ. ठीक है, उसको फंड्स नहीं मिलते. ये रेलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने इस पर बहुत सारा डिस्कशन किया था व्हेन हीट वेव्स वर इन न्यूज. हीट वेव को एक नेचुरल डिजास्टर बना देना चाहिए, इस पर हमने काफी डिस्कशन किया था, सो दैट पीपल हु वर लूजिंग देयर लाइफ एज पर, नॉट एज पर, ड्यू टू हीट वेव्स, उनको जो है उसमें रिलीफ मिल सके. बट दे रिफ्यूज टू entertain heat wave to be added to the notified disaster list. And उसके लिए उन्होंने अपना रैशनल, अपना लॉजिक दिया कि भाई हीट वेव इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. अब दिल्ली में जो है टेम्परेचर्स नॉर्मली समर्स में चले जाते हैं 35-40, इवन 42-43.
और दिल्ली में हीट वेव क्लासिफाई करने के लिए आपको 48 49 टच करना पड़ता है. बट अगर आप बोल दो कि अगर टेम्परेचर 42 या 40 क्रॉस होगा तो हम उसको हीट वेव बोल देंगे. बट दैट इज अगेन नॉट ट्रू फॉर अदर स्टेट्स. दिल्ली में हीट वेव 42 पे आएगी, लेकिन उत्तराखंड में अगर टेम्परेचर 35 भी क्रॉस हो जाए या हिमाचल में 35 क्रॉस हो जाए तो उनके लिए तो वो हीट वेव है, क्योंकि वहां टेम्परेचर डज नॉट यूजुअली क्रॉस 25 30 और इवन 35 इन समर. सो 40 फॉर देम इज अ हीट वेव, but 40 is absolutely normal thing for Delhi. It's a routine day in Delhi. So उसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हीट वेव को कैसे आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लासिफाई करोगे, कि आपको स्टेट वाइज उसको बनाना पड़ेगा. तो इस वजह से योर नोटिफाइड डिजास्टर लिस्ट डज नॉट इंक्लूड हीट वेव एज ऑफ नाउ. So these are three things which are discussed primarily in this particular editorial article. That is the gist of the article which I just told you. Let's read what the article is saying and understand it better. I hope you all can see the newspaper. और भी 2-3 आर्टिकल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हो. डीलिंग्स एट अ चाइना अफ्रीका फोरम, दिस यू कैन रीड. इट्स एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल. Okay, so here we are. On August 1, 2024, central government introduced the disaster management bill in Lok Sabha. Brought in the wake of climate-induced disasters, bill shows evidence of further centralization of an already heavily centralized disaster management act. This act in its current form already mandates the creation of many authorities and committees at national, state, district levels. Proposed bill further provides statutory status to pre-act organizations such as National Crisis Management Committee and High Level Committee, complicating the chain of action to be followed in case of disasters. A repercussion of this top-down approach or top-to-bottom approach is seen when there is a delayed response to disasters, antithetical to the intent and purpose of the act. Intent and purpose of the act क्या है कि instant relief मिले disaster में, और उससे उल्टा ही हो रहा है. The bill claims to strengthen the working of the NDMA, which is your National Disaster Management Authority, and SDMAs to prepare state and national level plans. It establishes urban disaster management authorities in state capitals. However, this intended decentralization of functions without the necessary financial devolution creates more problems than it solves. फाइनेंशियल डेवोल्यूशन आपको पता है, हमने इस टर्म के बारे में डिस्कस किया है. डेवोल्यूशन इज बेसिकली सेंटर से स्टेट्स को फंड्स एलोकेट होना. ठीक है, तो वो कह रहे हैं अगर आप डिसेंट्रलाइज कर दोगे फंक्शंस को और फंड्स दोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा. इट वुड जस्ट क्रिएट मोर प्रॉब्लम देन इट सॉल्व्स. सेंट्रलाइजेशन एज अ कंसर्न, ये मैंने आपको समझा दिया. व्हाई इज सेंट्रलाइजेशन अ कंसर्न? सेवियरिटी ऑफ द डिजास्टर मस्ट नेसेसिटेट a prompt response by the central government, currently absent in the act. Delayed response was witnessed when disaster relief funds from NDRF were denied to Tamil Nadu and dispersed much later to Karnataka. In the backdrop of a looming crisis, there is a need to revisit the idea of the Disaster Management Act. अब ये बात हो रही है सेकेंड पॉइंट की जो हम डिस्कस कर रहे थे, restricted definition of a disaster. So they are not planning to classify heat waves as a notified disaster under the act. This statement concurs with the observation of Finance Commission, which did not find merit in expanding the scope of notified disasters. तो कौन कौन से अभी notified disasters ये आपको पता होने चाहिए. ये are cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud burst, pest attack, frost and cold wave. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग आप सबको इन वर्ड्स के मीनिंग पता है. ड्रॉट इज सूखा पड़ जाना, सुनामी आपको पता है, लैंडस्लाइड आपको पता है, एवलांच भी आप आई एम गेसिंग आपको पता है, एंड बाकी सारे भी सिंपल वर्ड्स हैं. द स्ट्रिक्ट आइटरेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिजास्टर इन टाइम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मार्क्स अ शार्प डिपार्चर फ्रॉम द ग्लोबल नैरेटिव. यानी कि ग्लोबल नैरेटिव जो है वहाँ पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है नेचुरल डिजास्टर को. क्लाइमेट चेंज को भी एक्नॉलेजमेंट में लिया जाता है, हीट वेव को भी एक्नॉलेजमेंट में लिया जाता है. Globally, there is enough consensus to classify heat waves as a climate-related disaster, given the ramification on ecosystem and human health. तो इस बार काफी सारे लोगों की जान गई heat wave की वजह से. India had 536 heat wave days, and this was highest in 14 years. 10,000 something people lost their lives, and the act falls short as a definition of disaster to cover this idea, and it remains restricted and static, unchanged. This is because notified list of disaster under act restricts the inclusion of climate induced disasters such as heat wave. तो वही सारी बात हो रही है. ये एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था कि a normal summer temperature of 40 degree in North Indian states may classify as heat wave condition in the Himalayas. ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है. रेलेवेंट इश्यूज क्या हैं? सम क्वेश्चंस आर स्टिल वैलिड. इज द बिल अडेप्ट टू टैकल कंटेम्पररी चैलेंजेस ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेट पावर डायनामिक्स? Do states have to largely depend on the central government for funds? And there is a need to revisit centers' effort in addressing issue of financial management and preparedness. ठीक है, and keeping in context what happened in Wayanad, what is it that can be done to manage disasters and predict their future occurrence? After all, a blame game will only move away
फ्रॉम रियलाइजिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सेंटर और स्टेट का साथ में काम करना। ठीक है जी, तो ये रहा आपका एडिटोरियल आर्टिकल। वी हैव अंडरस्टूड इट इन डिटेल। आई होप बोथ द आर्टिकल्स आर क्लियर। ये भी अच्छा आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हो, नॉट फ्रॉम अ कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बट जस्ट फ्रॉम अ अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट काफी कम है हमारी कंट्री में जितने होने चाहिए उससे। ये आर्टिकल बात कर रहा है विनेश फोगट कंट्रोवर्सी की। दिस पर्सन इज अ सिस्टर ऑफ वन ऑफ माय बैचमेट, एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। इंटरेस्टिंग आर्टिकल। बाकी तो यूएलआई आपके साथ सलीक सर डिस्कस कर चुके हैं। यूएलआई पे एक आर्टिकल आया है, पढ़ लेना अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है यूएलआई के बारे में कुछ भी। बाकी देयर इज नथिंग मच व्हिच वी नीड टू डिस्कस टुडे। लेट्स गो टू आवर मेंटी क्विज। लेट्स डू आवर मेंटी क्विज व्हिच इज करंट अफेयर्स फॉर जून एंड जुलाई। दिस इज द कोड फॉर द मेंटी क्विज। मैं प्रोसेस बता देता हूँ उन लोगों को हु आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर format of quizzing. So you simply need to go to www.menti.com, menti, menti.com. It would prompt you to enter a numerical code, and you need to enter this code 5988 6694, and you just need to enter your name. Just type in your name, ABCD, whatever your name is, and you would be taken to a quiz, which I would start. It would be a MCQ based quiz. You need to answer all the questions, there's no negative marking, and you get maximum points if you answer it fast. So that is the simple concept. Okay, you need to open it on a different tab on your laptop if you are using a laptop to access this stream, or you can open it on your phone, on your smartphone as well. Okay, so I'll give you 1 minute to register for the Menti quiz. Go to menti.com, enter the code 59886694, and quickly enter your name, and then we'll start the quiz. I think I forgot sharing the tab. Pardon me, guys. This is the code. The website is menti.com, and the instructions remain the same. ओके, चलो जल्दी से आ जाओ कोड पे, क्विज स्टार्ट करते हैं। द टाइटल इज वर्ड प्ले। वेयर इज द टाइटल वर्ड प्ले? ओ अच्छा, नॉटी वाला बोल रहे हो, ओके। हम्म कैन यू कवर द तीस्ता वाटर डिस्प्यूट? ओके, वी कैन कवर द तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, व्हाई नॉट। अभी जल्दी से मेंटी क्विज करते हैं। आई विल शेयर द कोड इन योर चैट बॉक्स एज वेल। जल्दी से go and register for Menti. Give me a yes if you are on the Menti platform and are ready to start. I'll also present my screen. Menti, Menti, Menti. All right. इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आर यू गाइस रेडी? शुड वी स्टार्ट या फिर वेट करना है? आई विल वेट फॉर 30 more seconds. जल्दी से रजिस्टर कर लो सब लोग। Go to menti.com, www.menti.com, put in the numerical code which is on your screen 59886694, and you would reach the quiz. Quickly enter your name, enter your ideally your full name, but your first name is must. Don't enter random usernames which Menti allocates you. And then we'll start. We'll start at sharp 3:24. So you have 30 more seconds. Arman is saying use another GIF in the next quiz. ठीक है. Okay, sir. How many questions? I think approximately 20 questions today. It did not ask for a name. It will. It will. Wait. Let me move to the instructions slide. अब आएगा name का. So the instructions are simple. Please answer all the questions. Be as quick as possible to score more points. ठीक है? Are you guys ready to start? It's 3:24.
And let's begin our Menti quiz for the day. Let's see how many people are ready for the first question. 33, 34, 35. All right, 36, 37, 38. क्या हम 40 टच कर सकते हैं आज? Let's wait for 5 more seconds. 39 हो गए. Come on, एक बंदा और आ जाओ जल्दी से. I'm waiting for 5 seconds. Let's see if we can do 40 players. 38, 39 में fluctuation हो रहा है. 5, 4, 3, 2, 1. चलो कोई बात नहीं, 39 के साथ स्टार्ट कर लेते हैं. The first question for 39 players coming up on your screen now. Very easy question. Halwa question. Easy peasy question. Which Indian state recently passed a bill to increase the minimum marriage age for women to 21? ये तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, ये गलत नहीं होना चाहिए. अरे, only half of you got this right, even less than half of you. I'm a little heartbroken. दिल दुखा दिया आपने मेरा. हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली एज बढ़ा दी, 18 से 21 कर दी मिनिमम मैरिज एज की, सो दैट मोर वुमेन बिकम इंडिपेंडेंट, दे एंटर द वर्क फोर्स, दे गो फॉर हायर स्टडीज. उन्होंने जो रीजन बोला, इट इज हायर स्टडीज, कि मोर वुमेन वुड बी इंसेंटिवाइज टू परस्यू हायर स्टडीज, ताकि हम अगर हम एज बढ़ा देंगे. ठीक है, तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट to increase the minimum marriage age for women from 18 to 21. Let's see who has adorned our leaderboard today. We have Riddhi with the fastest response, Pavi, Pushkar, Mukti, Shweta, Sharve, Nidhi, Rabia, Arman, Kashish. Lovely. I like it that there is so less margin of points in all the people among the leaderboard. It's a tough competition. 38 players are ready for the second question. The second question coming up on your screen in 3, 2, 1. General elections conducted this year. Election Commission of India का article बता दो मुझे जल्दी से. Which article talks about Election Commission of India? Oh, nice. Lovely. 26 people got this correct. 324. Article 324 talks about the establishment and working of Election Commission of India. Good job, guys. You're well prepared. I like it. Riddhi, Pavi, Mukti, Shweta. Okay, pardon me. Riddhi, Pavi, Mukti, Sharve, Shweta, Rabia, Arman, Advika, Pradnesh, Deeptakshi. Okay, I see a new name on the leaderboard. Couple of new names, in fact. And it's a stiff competition. I'm loving it. अरे वाह, क्या बात है, 40 प्लेयर्स क्रॉस कर गए हम. 41 प्लेयर्स रेडी टू प्ले. लवली. थर्ड क्वेश्चन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन, गाइस. 5 new countries were invited to join the BRICS group. The invite was issued after the Dash Declaration of 2023. A small typo, but the question makes sense. Okay, less than half of you got this correct. It was the Johannesburg Declaration of 2023. साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई थी, एंड वहां पे फिर 5 कंट्रीज को इनविटेशन दिया गया था. 6 को दिया गया था इनफैक्ट. अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया, अर्जेंटीना ने रिफ्यूज कर दिया. बाकी जो 5 कंट्रीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. कौन कौन सी हैं आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड अर्जेंटीना रिफ्यूज्ड इट. Sharve was the fastest. अरे वाह, टॉप स्पॉट. सेकंड पे अरमान, देन पावी, प्रज्ञेश, रिद्धि, दीप्ताक्षी, देविका, मुक्ति, श्वेता, राबिया. Loving it. Beautiful, guys. Beautiful performance. Question number 4 out of 20 coming up on your screen in 3, 2, 1. G7 सबसे पहले कहां पे हुई? G7 took place in June in Italy. But the first G7 summit took place in France in which year? Tough हो गया ये question. Only 14 people got this right. The first G7 summit happened in 1975. ठीक है, बाद में रशिया ने भी ज्वाइन किया था G7 को, उसके बाद ये G8 बन गया था, फिर वापस G7 बन गया. ठीक है, तो G7 के बारे में आपको सब पता होना चाहिए.
Pavi, Pradnesh, Deeptakshi, Devika, Mukti, Achyut, Sanvi got this correct. Oh, new numbers on the leaderboard, new names on the leaderboard. Pavi was the fastest, got the top spot. Pradnesh got second. Deeptakshi, Devika, Sharve, Arman, Mukti, Achyut, Riddhi, Sanvi. Interesting. आज तो काफी टफ फाइट चल रही है. 41 players ready for question number 5. Question number 5 coming up on your screen now. World's first rocket with fully 3D printed engine was recently launched by which country? ये तो इजी क्वेश्चन है. इजी पीजी क्वेश्चन है. इस पे हमने डिस्कशन भी किया है. हाफ ऑफ यू गॉट दिस राइट. भाई इंडिया ने बनाया है यार. सॉर्टेड नाम है उस मिशन का. SORTED बाय अग्निकुल कॉस्मोस. फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन इंडिया में बना है. ठीक है, याद रखना इसको. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट्स नॉट चाइना, नॉट जापान, नॉट रशिया. इट्स इंडिया. लेट्स सी हु ऑल गॉट दिस करेक्ट. Mukti and Achyut got this wrong. Pavi, Pradnesh was the fastest. Deeptakshi, Devika, Arman, Sharve, Riddhi, Mukti, Achyut, and Priyanshi. All right, come on, buckle up, guys. Question number 6. 41 players ready to play. The question number 6 is coming up for you now. You need to tell me the state where these two bird sanctuaries are located, Nagi and Natti, who became Ramsar sites. Which state are we talking about? It is Bihar. It's not Odisha, not Chhattisgarh, not Rajasthan. Bihar mein hai Nagi Bird Sanctuary and Nakti Bird Sanctuary added to the list of Ramsar sites. ठीक है? चलो, let's see. किस किस को पता था ये question? Pavi and Arman did not get this and would cost a few places on the leaderboard. Pradnesh has come up on top. Then we have Devika, Pavi, Deeptakshi, Sharve, Riddhi was the fastest. Coming up again, Mukti, Arman, Agam, and Priyanshi. Agam has come up on the leaderboard. Devika has come up on second position. Good going, guys. Good going. 44 players have come up. Arey wow, players are increasing with every question. I'm loving it. New players, welcome to the quiz. Question number 7 coming up on the screen now. Recently, Ministry of Health has partnered with Dash to launch the National Health Claim Exchange. किसके साथ पार्टनर अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज बनाने के लिए? नीति आयोग, IRDAI, LIC, WHO. Only 14 people got this correct. थोड़ा सा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था ये. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के साथ कोलैबोरेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टू फॉर्म द नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज. इट्स नॉट नीति आयोग, नॉट WHO एंड नॉट LIC. लेट्स सी किस किस को पता था ये. Okay, Pradnesh is on the top spot. Pavi was the fastest and is on second. Sharve, Devika, Mukti, Arman, Deeptakshi, Riddhi, Steph has come up on the leaderboard. Tanvi has come up on the leaderboard. So, काफी intense fight चल रही है. We have 42 players playing with us. The 8th question is ready for you guys and it's coming up on your screen now. Maitri Setu to connect India and Bangladesh is being built on which river? इंडिया बांग्लादेश रिलेटेड सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ओ माय ये तो टफ क्वेश्चन हो गया. इट्स नॉट द तीस्ता रिवर. ये ब्रिज बन रहा है जो इंडिया में त्रिपुरा को बांग्लादेश से कनेक्ट करेगा. इट्स इन साउथ त्रिपुरा. द रिवर नेम इज फेनी रिवर एंड इट्स नॉट तीस्ता. लेट्स सी कौन है वो 11 धुरंधर जिनको ये आंसर आता था. Okay, some of them are the leaderboard, some of them are not on the leaderboard, but full kudos to all of you who knew this. Pradnesh, Sharve, Pavi, Riddhi was the fastest, has occupied 4th spot. Then we have Deeptakshi, Steph, Devika, Shweta, Mukti, and Arman. I'm loving the fight on the leaderboard. 9th question coming up for 42 players on your screen in 3, 2, 1.
Indian Army recently got its first indigenous man-portable suicide drones called what? Netra, Abhyas, Harpi, or Nagastra? Okay, this was an easy question for most of you. 25 people got this correct. Let's quickly look at the leaderboard. Sharve and Riddhi answered it the fastest. Pradnesh is still on first. Sharve on second. Pavi, Riddhi, Deeptakshi, Devika, Steph, Shweta, Arman, and Agam. It would just take one question to remix the leaderboard, topple the ranks. So wait for your question to come up. 43 players. We are halfway into the quiz. Question number 10 coming up on your screen now. This is an interesting question. नालंदा यूनिवर्सिटी किस डायनेस्टी में बनी थी? अरे वाह, most of you knew this. क्या बात है, very good. Gupta dynasty is the right answer. The ruler's name was Kumar Gupt, and it's not Mauryan dynasty, not Nanda dynasty, and not Khilji dynasty. Khilji dynasty में अलाउद्दीन खिलजी के रूल के अंडर it was not अलाउद्दीन खिलजी, some खिलजी, उसके रूल के अंडर it was demolished. Riddhi was the fastest for this. Pradnesh, Sharve, Pavi, Riddhi, Deeptakshi, Steph, Shweta, Agam, Tanvi, and Devika on the leaderboard. Lovely. Question number 11, 43 players. Let's go for the question now. In the Muhammad Abdul Samad case, Supreme Court held that section dash of CRPC applies to divorced Muslim women. This is a very recent case. We discussed this in the class at length. पता होना चाहिए ये, सबको पता होना चाहिए ये. Okay, not bad. 25 people knew this. It's section 125 of CRPC. It's about maintenance to a Muslim woman. Important case है, याद रखना इसको. Pradnesh, Sharve, Pavi was the fastest, then Riddhi, Deeptakshi, Shweta, Agam, Tanvi, Devika, and Steph. All right. Question number 12. 42 players ready, 43 players playing with us. Let's go for the question number 12 coming up on your screen now. आपको मुझे बताना है इमरजेंसी कब तक चली थी? संविधान हत्या दिवस तो सबको पता है, ये तो इजी क्वेश्चन है. इमरजेंसी के लिए लगा था, ये भी इजी क्वेश्चन है, बट इमरजेंसी कब तक के लिए थी, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है. तुक्के मारे, सब ने तुक्के मारे हैं ना, ब्लाइंड गेसेस राइट अवे. 21 मार्च 1977 इज द करेक्ट आंसर. सो 2 ईयर से थोड़ा सा कम टाइम, बट ये डेट याद रखनी चाहिए आपको. इमरजेंसी स्टार्ट हुई थी 25 जून 1975, एंड हुई थी 21 मार्च 1977. ठीक है, आर्टिकल भी पता होना चाहिए नेशनल इमरजेंसी का, क्या आर्टिकल होता है, एंड उसके आसपास फिर आपको स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के आर्टिकल भी पता होने चाहिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो देखते हैं किसके तुक्के सही बैठे हैं इस बार. All right. Arman was the fastest for this question, has come up on the leaderboard again. Pradnesh, Pavi, Sharve, Riddhi, Agam, Diptakshi, Shweta, Arman, Devika, and Mukti. All right. The OG quiz players are adorning our leaderboard. I want new names. Come on, guys, buckle up. The next question, 13, on your screen now. When was Tibet? When did Tibet become independent? Okay, we discussed this in the class at length that in 1913, after the fall of Qing dynasty, the Dalai Lama declared independence, and फिर इनका rule रहा था till 1949. Then China started exerting control, and 1951 में they forcefully occupied Tibet, and it became an autonomous region of China in 1951. ठीक है, तो ये numbers आपको पता होने चाहिए. रिसेंटली यूएस का काफी टिफ चल रहा था बिकॉज दे पास द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट. उनके एम्बेसडर्स इंडिया भी आए थे, दलाई लामा से भी मिले, एंड काफी कुछ हुआ. ठीक है, बढ़िया है. हाफ ऑफ यू न्यू दिस, हाफ ऑफ यू डिड नॉट.
अरे वाह, फर्स्ट and second spot holders did not know this. All right. Pradnesh, Sharve, Riddhi, Pavi, Agam, Diptakshi, Devika, Mukti, Tanvi, and Steph was the fastest for this one. All right. Question number 14. 42 players ready with us. Let's go for the question. Question coming up on your screen now. Shanghai Cooperation Organization कब establish हुआ? ओके, लॉट ऑफ यू न्यू दिस. कुछ कुछ लोगों ने तुक्के मारे हैं जिनके तुक्के गलत हो गए हैं. इट वाज 2001. द हेडक्वार्टर्स इज इन बीजिंग. रिसेंटली मीटिंग हुई थी अस्थाना में, विच इज कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान. हमारी तरफ से पीएम मोदी नहीं गए थे, हमारी तरफ से गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी. Mukti was the fastest for this one. Pavi has come up on the first spot. Lovely. Then we have Pradnesh, who has been toppled and has come on second. Sharve, Riddhi, Agam, Diptakshi, Mukti, Devika, Steph, and Priyanshi. I think we'll have a new winner today. Okay, 39, 40 players ready for the 15th question. We are towards the last leg of our quiz. So be very fast now. It's time to topple the leaderboard. Chaos in Bangladesh were preceded by wide-scale protest against dash percent quota for freedom fighters descendant. अरे बाप रे, इतना तेज रिस्पॉन्स. ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, एट लेंथ डिस्कस किया है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टुडे आर फ्रॉम आवर क्लासेस. अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको ये सारे आते होंगे. Overwhelming majority of you got this correct. It was 30%, absolutely. 30% फ्रीडम फाइटर डिसेंडेंट्स के लिए था, 10% विमेन के लिए था. Pradnesh, Riddhi, and Agam did not get this right. This is surprising. Misclick हो गया क्या? Pavi was the fastest. Charve, Pradnesh, Deeptakshi, Mukti, Devika, Steph, Riddhi, Agam, and Tanvi are on the leaderboard. Question number 16. 39 players are ready with us. 2 players have lost hope. Let's go for question number 16. Coming up on your screen now. फर्स्ट स्टेट टू पास गिग वर्कर्स के लिए लेजिस्लेशन, ये भी क्लास में बताया मैंने. Okay, only 15 people got this correct. I was hoping for more people to get this right, considering we have talked about this in the class. Pradnesh, Mukti, Steph, Riddhi, Agam. Okay, Pavi still on first. Pradnesh, Sharve, Mukti, Steph, Riddhi, Agam, Diptakshi, Devika, and Rabia. Some old players on the leaderboard have come up again on the leaderboard. So bounce back chal raha hai, badhiya sa. 38 players are ready for question number 17. Let's go for question number 17 coming up on your screen now. तो एक बजट से क्वेश्चन डालना तो बनता था, तो वो ये रहा. ये भी हमने डिस्कस किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए. Only 12 people got this right. 17,500 was the savings as per the new tax slabs, new tax regime. It was not 25, not 22,500, 17,500. Okay, let's see. किस किस को याद था ये नंबर? Pradnesh, Sharve, Mukti, Steph, Tanvi. Tanvi was the fastest. Sharve has come up on top again. Okay, Pradnesh is on second. Steph, Mukti, Pavi, Riddhi, Agam, Diptakshi, Devika, and Tanvi was the fastest. All right, we're getting a new player on the top position with every question. This is an intense quiz. 39 players ready for the next question on your screen now. तो जो लोग कहते रहते हैं T20 वर्ल्ड कप पे क्विज करो, T20 वर्ल्ड कप पे क्विज करो, आई होप यू ऑल गेट दिस वन करेक्ट. T20 वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपको. चलो, बैंड बज जाती है आप लोगों की. T20 वर्ल्ड कप पे अगर हम क्विज करते तो ओनली 8 पीपल गॉट दिस करेक्ट.
इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज दो ऐसी कंट्रीज हैं जो T20 वर्ल्ड कप दो दो बार जीत चुकी हैं, ठीक है। इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज, सब जगह ऑस्ट्रेलिया नहीं होती है, बहुत सारी जगह होती है बट सब जगह नहीं होती है, ठीक है। चलो, एंड इंग्लैंड वाज द ओनली कंट्री रिसेंटली जिसके पास ओडीआई वर्ल्ड कप भी था एंड T20 वर्ल्ड कप भी था पिछली बार। Sharve was the fastest. Seems like Sharve is a cricket fan. Then we have Mukti, Pavi, Pradnesh, Steph, Tanvi, Riddhi, Devika, Agam, and Deeptakshi. All right. Question number 19. 39 players ready to play with us. The second last question is coming up on your screen now. Space Maitri mission is a collaboration between ISRO and which country? ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन हो गया। इट्स अ कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हमने एक SSLV भी लॉन्च किया था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया था एज पर दिस मैत्री मिशन। तो मैत्री में A स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके, वेरी फ्यू पीपल गॉट दिस करेक्ट। प्रज्ञेश, स्टेफ, रिद्धि, देविका, अगम, दीप्ताक्षी। All right, Sharve still holds first position. Pradnesh on second, Steph on third, Mukti, Pavi, Riddhi, Devika, Agam, Diptakshi, and Tanvi. Chalo, last question, last chance to feature on the leaderboard, guys. 39 players ready. Let's see if you can answer this easy question. Okay, a lot of you got this correct. Not bad. Light fidelity, जैसे Wi-Fi is for wireless fidelity, Wi-Fi is for light fidelity. ठीक है, using light, visible light for data transmission. Okay, let's look at the final leaderboard of the quiz. Let's see who has emerged as the winner. And अरे वाह, क्या बात है, Mukti has won the quiz. Claps for Mukti. Congrats, Mukti, in the chat box by everyone would be appreciated. Well played, Mukti. Last में आके बाजी मार ली, बाजीगर बन गए. Then we have Pavi, who performed really well, stayed on top for a lot of questions. Sharve also stayed on top for a lot of questions. Pradnesh also stayed on top for a lot of questions. Steph performed really well today. Riddhi also performed really well. Agam, Deeptakshi, Tanvi, Devika, all of you did really, really well. And lovely performance from all of you. All of you who did not come up on the leaderboard, I know you guys performed really well. You were answering a lot of questions correctly. And I am really, really proud of that. चलो, वापस आ जाते हैं. Life gives a plot twist every week. Congrats, Mukti. Okay, Priyanshi is saying 12th आई, good performance. Divij is saying मैं 11th आया, lovely. बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, मजा आ गया. क्विज कैसा था आज का, ये बताओ. How was today's quiz, guys? Feedback on today's quiz. मजा आया, इंटरेस्टिंग था. लास्ट में एल हो गया. कोई बात नहीं, मेरे लिए सबका डब्लू हुआ है यहाँ पे. ऑल ऑफ यू आर डब्लूज, ओजीज. Messed up near the end, fall from grace, but good quiz. Okay, relevant questions. Misclick 4 questions. रिद्धि ने 4 मिसक्लिक किए हैं आज. कोई बात नहीं रिद्धि, दूसरों को भी जीतने का मौका देना चाहिए. Congrats, Mukti, justice for Sharve. All right, lost internet connection in the middle. Okay, कोई बात नहीं. Last time 23rd आया था, आज 11th. That's a good jump. That's a lovely jump. चलो, I'm glad you guys liked the quiz. Next quiz का टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं. नेक्स्ट क्विज का टॉपिक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है. एंड आप लोग कमेंट्स करो, एंड जिस कमेंट्स पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उस कमेंट के टॉपिक को हम फ्राइडे को मेंटी क्विज में करेंगे, ठीक है. यहाँ पे बहुत ज्यादा केओस हो जाता है डिस्कस करने में. सो आफ्टर द स्ट्रीम एंड्स, टेल मी फ्राइडे का मेंटी क्विज का टॉपिक्स विच यू ऑल वांट मी टू कवर. जून जुलाई हमने थोड़ा सा कर लिया, एक और भी कर सकते हैं हम जून जुलाई पे, जून जुलाई अगस्त पे, या फिर पीछे भी जा सकते हैं हम, अप्रैल मई पे भी जा सकते हैं. कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी पिक कर सकते हैं. यू गाइस टेल मी आफ्टर द स्ट्रीम एंड्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड ये वाला लाइक कर दो जल्दी से वीडियो, क्विज में तो मजा आ जाता है. तो क्विज के वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दिया करो स्टार्ट होने से पहले ही.
And yeah, that's all for today. Like, share, subscribe. You guys know the drill. And I'll see you all again in another Hindu analysis tomorrow at 3 p.m. Bye bye. Take care. Thank you so much, guys. Thank you for participating. Keep learning, keep preparing. That's me signing off.